Namaste. I'm Michael, and I travel in my car. तो भाई मैं आ गया हूँ न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में मेरे पास है माइकल अपनी गाड़ी चला के मेरे से मिलने के लिए। और माइकल जो है वो अपनी गाड़ी में रहता है, गाड़ी में ही पूरा देश घूमता है, और गाड़ी में ही सोता है, गाड़ी में ही खाता है, गाड़ी में ही खाना बनाता है, सब कुछ चीज़ें गाड़ी में करता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो भी देखने वाले हैं। Michael, good morning. Why don't you show us your morning routine? Let's do it. So this is your bed? Yeah, this is my bed. We got a couple layers of memory foam padding right here. Uh-huh. And there's also padding under here, Yeah. as well as some storage. What's this? A sleeping bag? That's my heated sleeping bag for when I sleep in below freezing temperatures. Like in Michigan, I slept there and it was negative 10 degrees outside. Wow. And where's the seat? So I actually unscrewed the seat so I could sleep in here, and actually I stick my feet into the back. I'm 6'2", Wow. and I know you're 6'4", and you were laying in here earlier, and it's pretty comfortable now. Yeah. Yeah. माइकल 6'2" है और ये यहाँ पे सोता है। ये माइकल का बेड है, ये इसने बेड बना रखा है। सीट है, सीट इसने फाड़ दी, सीट हटा दी अगली। He only has that driving seat and he doesn't need any other seat because he's traveling by himself. That's his pillow right here. Is the dashboard still functional? Oh, it is. Yep, you got all that. What have you got in there? Goodies. I just have some cologne. Here's my beard brush to keep the beard looking fresh. My Apple Watch. Just a bunch of random stuff. Yeah. बिल्कुल अपने घर में जैसे खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं, दराज होते हैं, इसने हर चीज़ को ऐसे बना रखा है। ये इसका एक और दराज। I see like another storage here. What's this? There's a power bank. Is this like sunscreen or something? No, it's hand cream. That's my hand lotion, and then right next to that is actually the sunscreen. Okay. And- These are some forks. Yeah, we got our gas station forks to eat our food. ये भाई इसके काटे चम्मच खाना खाने के लिए। And this is sanitizer? No. That is burn relief, so when I get sunburn. Oh. Yeah. So these are for all the haters who are gonna be burned after seeing this video, who want to live this life of living in a car but they can't. Now this is the trunk. Yeah, bhai ki diggi. What's in here? So basically, this is going to be the main function right here, and it's going to be our Coleman Camp stove. And it's extremely dirty right now, but this is where I do all my cooking. As you can tell, I've been cooking a lot. And where's the gas? The gas is actually located inside right here. Oh, here. Just a little propane thing right there. इस पे भाई खाना बनाता है. Are you gonna cook now? Yeah, we can cook. Okay, perfect. Let's cook an egg Sammy. Awesome. So we got to get the table out of the top trunk up here. तो भाई खाना बनाएगा अभी इस पे एग सैमी अपने स्टोव पे गाड़ी में. Up here I have a lot of extra storage, so I keep like my skateboard, some extra shoes, beach towel. But here is the table that I cook on. Oh wow. So we'll get this guy out. ये भाई का स्टोर है, गाड़ी के ऊपर ही स्टोर है. और ये this is the dining table. This is my dining table. Cooking cum dining table. Awesome. So how I'll do it. अब भाई बनाएगा खाना. So Michael is going to cook his breakfast now. How often do you cook? If I'm not eating fast food, I'll cook 3 times a day. But cooking 3 times a day is a lot of hassle. Why don't you just cook once and eat it throughout the entire day? You could do that as well. That's probably the smarter way to go about things, but Yeah. me personally, I just like to have like fresh food. Fresh food. Yeah, that fresh makes food. sense. But I do keep the leftovers, and I'll eat Yeah, the leftovers. I haven't cooked on this thing in like 3 days though. I just drove, Yeah. 16 hours from Florida. तो माइकल इससे पहले था फ्लोरिडा में, और मैंने माइकल की रील्स मेरे आ गया इंस्टाग्राम पे. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा ये कंसेप्ट. हालांकि यूएस में, यूरोप में ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है. काफ़ी लोग करते हैं ऐसा, मतलब अपनी वैन में रहेंगे या कार में रहेंगे, कैंपर वैन ले लेंगे, उसमें सब कुछ सामान रखेंगे और उसी में रहेंगे, ट्रैवल करेंगे. अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता. ये आरवी वाला कंसेप्ट अपने इंडिया में आया नहीं, क्योंकि इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहली बात बहुत अच्छे है. दूसरी चीज़ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो पार्किंग नहीं मिलती. तीसरी चीज़ थोड़ा सेफ्टी का भी इशू रहता है. तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आज माइकल के साथ कि ये कैसे टैकल करता है, इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करता है. और मैंने भाई की रील्स देखी तो मैंने भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज करा माइकल को कि मेरे को मस्त लगा भाई, मेरे को तेरे साथ वीडियो बनानी है. तो ये फ्लोरिडा से लेके न्यूयॉर्क तक मेरे से मिलने आए, स्पेशली गाड़ी चला के, जो कि
16-17 घंटे की ड्राइव है, जिसमें जाम में ही फंस गया। 19 घंटे की ड्राइव थी, 2 दिनों में भाई पहुंचा। इतनी मेहनत करके तो इतनी हिम्मत मेरे में तो नहीं है भाई, मैं तो नहीं कर सकता। डोंट यू लाइक फील claustrophobic at times? Or you just go out for a walk or skateboard if you feel that way? So yeah, if I'm feeling claustrophobic, I try to get out in nature and you know, like, just try to stay grounded on earth. Because sometimes when you're in there, it does feel cramped. Your back starts to feel hunched over. A really good outlet is actually just going to the gym and just running and working out as hard as I can and just getting that mental clarity. And then I'll go and go on a hike, or I'll go to the beach. Wow. Just something to get out of the car, because that's the beauty about living in your car is you don't want to be in it all day, so it forces you to go do stuff all throughout the day. Yeah, that makes sense. You know, you stay a lot more active. Oh wow, I never thought about it. And do you have a rough idea how many steps do you usually walk, even though you live in a car? Oh, at least 10,000 a day. At least 10,000, Yeah, even though you live in a car. Yeah. Wow. At least 10,000. But that does count my morning run. So I usually run a mile every morning. Wow. जो घर में रहते हैं गाड़ी चलाते हैं वो तो 3-4 हज़ार में नहीं चलते अपने इंडिया में। ये भाई गाड़ी में रहते हैं और 10,000 कदम रोज चलता है। So what is the first thing that you do when you wake up in the morning? Right here, chug water. Water. First thing is water. And then I'm trying to get out of this habit, but the second thing is checking my phone. Yeah. And I'll stay on the phone for like 10 to 15 minutes. And then immediately I try to go directly to the gym to get a workout in, get that mental clarity. Yeah. After that, I tend to go to a place with Wi-Fi, like a Starbucks, convenience store with Wi-Fi, cafe. Yeah. I'll sit there, I'll edit my videos, plan out content for the day. And then after I get my workout in and I do my work, then it's like playtime basically. I'll go skateboard, I'll go to the beach, I'll go see the sights. One thing I like doing is I just like seeing all the tourist attractions, because you know, I was just in Florida, so I'm going to every beach I can. I'm going to every hike I can go to. Any tourist attractions, anything in the area that's kind of touristy, I'm there. Amazing. These eggs are cooking up though. Wow. Sometimes it has a hard time cooking because of the wind. The wind blows at it, so I use this thing to kind of like... This is to block the wind? Yeah, I try to like block the wind. आप सभी लोग ये सोच रहे हो कि भाई नहाता कहाँ पे है या फिर हगता कहाँ पे है, ब्रश कहाँ पे करता है? So the next question, where do you actually go to take a shower, or where do you take a shit, basically? So I go all at Planet Fitness, basically. Planet Fitness, yeah. Planet Fitness. How much is the membership for? So you can get a membership for $10 a month, or you can get the exclusive membership for $25 a month. Which is the black membership? The black card membership. Yeah. You can get all. You can use the massager as well. Yeah. Which I love doing, because like I have a lot of memory foam, but sometimes I'll wake up and my back's a little sore. Yeah. That even happens to me if I'm sleeping in a regular bed, right? Yeah. So the massage bed really does help me get through the road trip. You know? तो यहाँ पे ना प्लैनेट फिटनेस है अमेरिका में, जो कि एक जिम्स की चेन है, काफ़ी पॉपुलर है। और वो किस लिए जानी जाती है कि इनके जिम्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। और ना मतलब इनके जिमों में मैंने भी उसी की मेंबरशिप ले रखी है, क्योंकि पास में हुई है। इनका बहुत हार्डकोर जिम्स नहीं होते, मशीन वाला सिस्टम होता है सारा, लेकिन उस जिम में शावर भी होता है, बाथरूम भी होता है, मसाजर भी होता है। तो सिर्फ $25 यानी कि इंडिया के 2,2100 रुपये के अंदर महीने की मेंबरशिप उधर आ जाती है प्लैनेट फिटनेस की, जिसमें आप चाहे वहाँ पे मसाजर यूज़ करो, एक्सरसाइज करो, शावर यूज़ करो, बाथरूम यूज़ करो। तो भाई सुबह उठते ही अपना प्लैनेट फिटनेस का कार्ड है, मेरा कार्ड भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो कार्ड लगा के उसमें एंटर करो, जाके अपना ब्रश करता है, हगता है, नहाता है, धोता है, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद मसाजर यूज़ करता है और उसके बाद वापस गाड़ी में आ जाता है। तो जो घर के बेनिफिट्स थे प्लस जो जिम के बेनिफिट्स थे, वो सिर्फ महीने के $25 यानी कि 2,000 से 2,100 रुपये के अंदर सारे जिम वाले, घर वाले बेनिफिट्स और मसाजर वाले सारे बेनिफिट्स उसमें इधर हो जाते हैं। प्लैनेट फिटनेस यहाँ पे इतना सस्ता है कि हर आदमी उसकी मेंबरशिप ले लेता है, लेकिन उन्हें भी पता है इतना सस्ता उन्होंने इसीलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे लोग जिम रोज़ जाते नहीं, मेंबरशिप लेके छोड़ देते हैं। तो इतना सस्ता उन्होंने कर रखा है, अगर जितने लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है अगर वो रोज़ आने लगे ना, तो ये जिम भर जाएंगे, यहाँ पे बाहर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। लेकिन कोई जाता ही नहीं रेगुलर, इन्हें जिम वालों को ही पता है। और जैसे जो लोग इस जैसे जो गाड़ी में रहते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। भाई देखो बिल्कुल सड़क पे ही लगा के इसने अपनी ये गाड़ी और ये ताम जाम सा और सैंडविच बना लिया, इसमें अंडे डाल दिए, चीज़ डाल दी, ब्रेड डाल दी। Michael, I was wondering if this is legal in the US to like just stop anywhere and cook, because in India no one cares. I mean you can do whatever you want to, but I'm not sure about the system here in the US. Do you think you could be in some trouble for doing it?
or not really? Have you ever been into trouble or something? No, I've never been in trouble. Okay. I'd say it depends on where you are. Right here, there's like tons of people walking around. I'm sure no one would mind. Yeah. And it's really just about being aware in the environment and reading the situation. So if somebody was coming up to me and they're uncomfortable with me doing this here, Yeah. I would leave immediately. Cheers. How's the sandwich? Top notch. Top notch. And this is the egg Sammy. That's what I call it, the egg Sammy. It's dripping with all its goodness. ये भाई किया कंपनी की गाड़ी है, गाड़ी का नाम है रियो, 2009 मॉडल है और एक ये सिडान है, जैसा कि आप देख सकते हो, हैचबैक या फिर एसयूवी नहीं है। सिडान में काफ़ी कम लोग करते हैं, जो भी लोग इधर अमेरिका यूरोप साइड आपको ऐसा करते भी दिखेंगे, सिडान में यूजुअली नहीं करते। नॉट मैनी पीपल यूज देयर सिडान्स एज अ कारवैन, राइट? No, it's extremely rare. ये है भाई की ड्राइविंग सीट। माइकल भाई की हाइट है 6 फुट 2 इंच, जो कि काफ़ी बड़ी हाइट है गाड़ी में बैठने के लिए और गाड़ी में रहने के लिए। मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच, तो मतलब बराबर सी ऑलमोस्ट। ये शीशे करा रखे हैं काले, इनके बारे में अपन जानेंगे भाई से कि भी ये शीशे काले क्यों करा रखे हैं, इधर अलाउड है नहीं है। इधर देख सकते हैं अपन एक तकिया है, ये है भाई का गद्दा जिस पे सोते हैं, नीचे और गद्दे वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको दिखाई चुके हैं, चलो छोड़ो। ये जैसा कि मैं देख सकता हूँ ये है साबुन हैंड वॉश के लिए। पीछे मेरे को दिख रहा है एक कैमरा बैग सा, ये सारा सौदा क्या है, एक ट्राइपॉड भी रखा है भाई। और ये क्या है, ये भाई से अपन पूछेंगे। इज दिस फायर अलार्म, this white thing? Oh yeah. That's my fire alarm and my carbon monoxide detector. Okay. Yeah. You have a fire alarm in the car. Yeah, you got to. अपने तो बाकी पहली बात फायर अलार्म होते ही नहीं इंडिया में, फिर भी लेकिन बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई गुड़गांव में फिर भी जैसे बड़ी सोसाइटीज में लगे मिल जाते हैं, घरों में ऑलरेडी फिट आते हैं बड़ी सोसाइटीज में। तो अपने इंडिया में क्या करेंगे, बीड़ी सिगरेट पीनी होती है या फिर घरों में पराठे बनने होते हैं, तलना खाना तलना होता है, धुआं होता है, उसमें जो लगा होता है उसे भी पॉलिथीन से ढक देंगे कि ये काम ना करे। मतलब घर में गलती से फायर अलार्म लगा आ गया तो उसे भी बंद कर देंगे कि भी फालतू में शोर मचाएगा, इस पे पॉलिथीन लगा दो या उतार देंगे उसे। और वहीं अमरीकी देखो, गाड़ी में रहने लग रहे हैं पर गाड़ी में भी कोई ऊंच नीच ना हो जाए, गाड़ी में भी फायर अलार्म लगा रखा है। मतलब भाई इतनी सी गाड़ी है, कहीं धुआं आएगा तो वैसे दिख ही जाएगा, उसी टाइम स्मेल आ जाएगी घर, तो चलो फिर भी बड़ा होता है। पर फिर भी मतलब देखो इन चीज़ों को लेके कितने सीरियस होते हैं, कार्बन मोनोक्साइड और फायर को लेके, कि भी इसमें भी एक अलार्म लगा रखा है इसने भाई ने। तो प्लैनेट फिटनेस पे भाई वाटर रिफिल भी होती है, उसी में अपना 1 गैलन पानी यानी कि 3.5-4 लीटर के करीब होता होगा ये 1 गैलन, जो कि है $1 का आ जाता है अगर सुपर मार्केट से खरीदो तो, यानी कि 80-90 रुपए का, जो कि काफ़ी सस्ता है। If I'm using science, like I could usually eat a sandwich, cook it and eat it within like 5 minutes. वाओ। Yeah. If I'm trying to be quick, because I try to be stealthy, just do it really quick and then get out of there. भाई ने मतलब 10 मिनट के अंदर ये अनपैक करके खोल के सौदा अपना सैंडविच ब्रेड ऑमलेट बना के अपना खा भी लिया और वापस पैक भी कर दिया। तो मैं ये बोल रहा था कि इतनी जल्दी किस तरह कर दिया। फिर माइकल बोला कि आज तो मैंने फिर भी जल्दी बनाया खाना, कि भी चीज़ें मैं साफ़ कर रहा था, ज़्यादा पोंछ रहा था, ढंग से धो रहा था। और दिनों जब मेरे को ज़्यादा जल्दी हो ना तो मैं 5 मिनट के अंदर खाना खोल के सारा सामान अनलोड करके बना के खा के पैक भी कर देता हूँ 5 मिनट में। तो यार मैं घर में हमारी माँ खाना बना के प्लेट में डाल के दे दे तो भी नहीं खाया जाता 5 मिनट में तो। और ये देखो भाई स्पीड तो पूरी है इसकी यार। This goes in here. Man, you've got a pair of Gucci slides. Yeah, I got a pair. भाई गुच्ची की चप्पलें ले रखी है भाई ने, गुच्ची की चप्पल लेके घूमता है। You already know. Yeah, it's super ironic, isn't it? Yeah, it is. I'm considered homeless, but I walk around in Gucci slides. ये है भाई का skateboard. So what Michael does is, parking हर वक्त नज़दीक नहीं होती, कई बार होता है parking से भी he has to walk for like a mile or 2 to go to Planet Fitness or wherever he's planning to go to. So what he does is, ये अपना skateboard लेते हैं और skateboard पे चलता हुआ चला जाता है, इंस्टेड की Uber कराए या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, पैदल जाएगा तो और भी टाइम लगेगा। भाई अंग्रेज होते तो सन की है, तो मैंने देख लिया। अपने इंडिया में अपने को टाइम ही नहीं मिलता ऐसे ऐसे शौक करने का, सोचने का, और मतलब चीज़ों से इतनी सिरदर्दी नहीं होती। अपने कौन रोड पे स्केटबोर्डिंग कर लेगा, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, 2 कदम चलते ही सीधा ठोडी लगेगी, नाक लगेगी ज़मीन पे। ये भाई इनके अलग ही शौक होते हैं भाई, ये तो मैंने देख लिया। हाउ ओल्ड आर यू? 22. Taylor Swift here, baby. 22 साल का कोई लड़का आप अपने इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो गाड़ी लेके घूम रहा हो, कहीं भी रोड पे खाना बना रहा हो, अपना स्केटबोर्ड लेके आवारागर्दी करता हुआ। इन लोगों को
की डेफिनेशन अलग है मुझे करने की, मौज करने की अपने से। तो अब हम आगे माइकल की गाड़ी में, और मैं अब इसने सीट तो फाड़ रखी है, बैठ तो सकते नहीं गाड़ी में, तो मेरे को लेटना पड़ेगा। कैन आई ले डाउन? Yeah, of course. ओके If you can fit. तो बैठ तो सकते नहीं गाड़ी में because there's no seat, so I have to lay down somehow. Barely get your feet in here. The size 13s. So my feet go in there, right? Yep. And then my head goes here, ready to go. Man, this is so comfy. Yeah. Driving around in New York, in US, while you get to lay down feeling like it's a bed. What can be better than that? Amazing. I'm excited. Never pay for a single hotel. Yeah, you don't pay for a hotel, you don't pay for Uber, nothing. Nope. I make my own money with DoorDash, actually. That's how I earn income. तो DoorDash बेसिकली अमेरिका में जिसमें खाना आपको डिलीवर करना होता है, बेसिकली फूड डिलीवरी, राइट? Yes, sir. So Michael does food deliveries and he makes some bucks out of that. What else do you do for a living? How do you get to afford all these groceries and everything? So DoorDash is one. Do you have any social media, or do you make some income out of that, or any other sources? Yeah, so I make majority of my income off social media, Instagram, YouTube, TikTok. It's all just the Michael Hickey if you want to go find me. Michael Hickey. Yes. Okay. तो माइकल जो है YouTube पे वीडियोस बनाता है, शॉर्ट्स एंड लॉन्गर फॉर्मेट वीडियोस एज वेल। टिकटॉक, सॉरी द इंडियन ऑडियंस कैन फाइंड यू इन टिकटॉक। माइकल की जर्नी किसी को फॉलो करनी हो, देखना हो, तो आप माइकल को YouTube पे, Instagram पे, एंड इफ यू आर एबल टू यूज टिकटॉक, आप टिकटॉक पे भी देख सकते हो। सो बेसिकली DoorDash and content creation, that's what you do for a living. Yep. How much do you think you pay for fuel? How much do you spend on fuel in a month? So $30 worth of fuel gets me 300 miles. I drive about 1,000 miles a month. I'd say just say like $200 a month, just like around $200 a month. Okay. On gas. If you were staying in a city or even in the suburbs, how much would you have been paying as rent? At least $800 a month. Wow. Yeah, at least $800 a month. And when you're living in a city like that, I mean, you only get to travel like 4 times a year, you know, however many vacations your jobs allow you. So my job is to travel. Wow. Yeah, you too, kind of. भाई अगर सिटी में रह रहा होता तो आपको रेंट पता ही, अमेरिका के मैंने आपको वीडियोस में पहले बता चुका कितने रेंट है, कितने एकदम आसमान छूते हुए रेंट है। तो $800 तो भाई रेंट दे रहा होता, जो कि इंडिया के 60,000 रुपये बनते, 55-60,000 रुपये महीने के रेंट में दे रहा होता। वो भी तब है जब ये किसी छोटे शहर के गांव में बाहर कहीं रह रहा होता। Here in New York City, the rent would have been like maybe 6-7 times at least. Then $800, you can't find anything for $800 in New York. Yeah, I haven't even looked down here. That's how expensive it is. Yeah, in Manhattan it should be like, for 2 rooms and 1 bathroom, it should be $6,000-7,000 a month. 6,000? Yeah. Oh my gosh. तो भाई यहाँ पे महीने के 4-5 लाख रुपए तो महीने का रेंट है न्यूयॉर्क में, अगर इस भाई को रहना होता तो। वहीं अपनी गाड़ी पार्क करता है। एंड हाउ मच डू यू थिंक यू पे फॉर पार्किंग इन अ मंथ? I pay zero. Zero. Yeah, I never pay. I only park in free parking spots, and I sleep in like Cracker Barrel parking lots or Walmart parking lots, or gas station travel centers. Wow. तो भाई पार्किंग के कोई पैसे नहीं देता, रेंट के कोई पैसे नहीं देता। He basically just pays for his fuel, and that is it. Car maintenance, how much do you think you pay for it? Well, I pay insurance on my car. Maintenance, I'd say it's probably like $200-300 a month. Yeah. Not even that, because this car is very reliable. Yeah. All I pay for is my phone bill, my insurance, and gas. How much is the insurance? Insurance is $100 and my phone is $100. Man, that is literally, you're living on what, like $300-400 a month? That's nothing in the US. Nothing. You can't survive with that money if you live in a home. No. Never. Absolutely not. Wow. Yeah. तो भाई सिर्फ महीने के 20-25 हजार 30 हजार मैक्सिमम मान लो, इसका खर्चा है 30 हजार मान लो खाना मिला के, जिसमें गाड़ी का खर्चा, फ्यूल और अपना गाड़ी की मेंटेनेंस, फोन का खर्चा, सारी चीज मिला के 30 हजार रुपये। अमेरिका में भाई कुछ भी नहीं है। एक टाइम का खाना आप रेस्टोरेंट पे खाने जाओगे ना किसी ढंग के में, उसका 4-5 हजार रुपये मिला जाता है। दिन के आपके 10 हजार खाने के लग जाएंगे, और ऊबर ले ली तो समझ लो 15 हजार लग जाएंगे ऐसी सिटीज में। तो मतलब महीने में 2-4 लाख से कम तो सर्वाइवल होता ही नहीं इधर, और ये 30 हजार रुपये में जीने लग रहा है भाई।
कमाल है. How do I put on seat belt? Just hold on to the oh shit handle. Okay. What if the police stops us? Then I'll probably get a ticket. तो भाई चालान कट जाएगा क्योंकि सीट बेल्ट तो लगा ही नहीं सकते. सीट तो पाट रखी है भाई ना. पर ये जैसे विंडोज है, ये इसने करा रखी है काली. So the windows are tinted, right? Windows are tinted 5%. No one can see in. Okay, 5%. But I do. If we moved all this stuff, I have a legal seat, 2 legal seats with seat belts back here, so I can legally carry 2 passengers. Oh, nice. पीछे सीट बेल्ट है basically. मैं illegally बैठा हूँ भाई. 5% is illegal. It's illegal? It's illegal, but it's not enforced. They don't enforce it very much. Tolerable. I could get a $50 ticket. It just depends. I haven't been pulled over. I've driven all over the country and no one stopped me. ये है भाई, हम अभी न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड की सड़कों पे आप देख सकते हो. थोड़ा सड़कों का नज़ारा भी आपको दिखा दूं. शीशे भाई ने करा रखे 5% टिंट, जो कि कह रहे हैं इधर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है. अलाउड नहीं है, मतलब काफ़ी काले है. और अंदर कह रहा है कुछ नहीं दिखता, जैसा कि हमने भी देखा बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता. तो आई थिंक सेफ्टी इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लिविंग इन अ कार. यू नीड योर प्राइवेसी एज वेल, सो हैविंग द टेंट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. Yeah. And at night I put up window covers, and I'll show you that when I get ready to go to bed. Perfect. I wonder, how do you get your laundry done? Laundromat. Laundromat. Okay. Just pull up, and I usually spend about $5. That is it? तो यहाँ पे लॉन्ड्री मैट होता है जगह जगह, जिधर आप अपने कपड़े दो वो धो के आपको देते हैं, रुक के वहाँ से करा लेते हैं. How many days do you usually get your laundry done? A week, 2 weeks, 3 days? I go about a week and a half. Okay, like 10 days? 10 days. So 3 times a month. अभी हम आगे प्लैनेट फिटनेस की तरफ. इधर भाई जाएगा, ब्रश करेगा, अपना नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होएगा, सारे काम करेगा और एक्सरसाइज भी करेगा. Roll her up. Michael, where do you think you would have been if you weren't in the car, living here in your car right now? I'd be working a mundane job, going through the loop of wake up, go to work, come home, watch YouTube, go to sleep, and then the same thing the next day. Wake up, work, YouTube, sleep. So I'd be doing that, and I'd probably be depressed and not living my full life, as God intended, I wouldn't be, I sure as hell would not be in New York right now with you. And how long do you plan on doing this? I want to gain a following. I want to gain 1 million followers. Yeah. I want to do a video where it's road trip to 1 million followers, and I want to do daily vlogs. Yeah. And not stop the road trip until I reach 1 million followers. But like I was telling you earlier, the burnout is very intense sometimes. Yeah. I'm still working my courage up to start that series, basically. ये ले लिया मैंने मेरा. This is my Planet Fitness free promotion. We're promoting Planet Fitness actually. मेरा black card. और अब हम चलते हैं Planet Fitness. How do I get off? Legs first or the upper body first? What do you recommend? Legs. तो गाड़ी हमने पार्क कर दी और अब हम जाने लग रहे हैं प्लैनेट फिटनेस. मेरा तो एक्चुअली होम जिम है, मैं इधर ही ट्रेनिंग करता हूँ ग्रेट नेक प्लाजा में. आज भाई भी इधर करेगा, इतनी दूर से आए. अभी आपको दिखाएंगे कि भाई क्या करता है प्लैनेट फिटनेस में आके. बेसिकली यहाँ पे आके अपना ब्रश वगैरह करता है, दाढ़ी वगैरह सेट करता है, नहाता है, धोता है, फ्रेश होता है, एक्सरसाइज करता है, मसाज लेता है. सारे काम बेसिकली जो हम एक घर में करते हैं उससे भी फालतू काम इस जिम में आके रोज़ कर लेता है और उसके बाद फिर वापस अपने दिनचर्या को फॉलो करता है. ये है भाई प्लैनेट फिटनेस. काफ़ी बड़ी जिम है वैसे तो. ये देखो भाई, उधर तो सारे ट्रेडमिल और ये सारा कार्डियो सेक्शन है, बहुत बड़ा है. उसके पीछे एब्स और स्ट्रेचिंग का और उधर वेट्स का सेक्शन है, वो भी दिखाऊंगा आपको. इधर ये सारी मशीनें हैं, इधर ये सारा एब्स और स्ट्रेचिंग. और फिर से सबसे पहले तो आते ही भाई जाता है लॉकर रूम में प्लैनेट फिटनेस. ये सारी मशीनें हैं भाई का. उधर लड़कियों का है, ये वाला है लड़कों का मेंस लॉकर रूम. चलो आते ही रखता है भाई. सो यू फाइंड अ लॉकर फर्स्ट. Nah, these are all taken. Yeah, this one's empty. सामान रखे बाद करता है भाई अपनी एक्सरसाइज.
तो ये है भाई की टॉयलेटरीज वगैरह। इसके बाद भाई लेते हैं यहाँ पे शावर। अंदर तो मैं साथ नहीं जाने वाला। See you। मेरे मन में एक ये सवाल है कि इसके जो पैकेजेस वगैरह आते हैं अमेजोन से या कहीं से कुछ ऑर्डर करते हैं वो सामान कहाँ आता होगा, क्योंकि ये तो गाड़ी में रहता है। I have a question. Where do you get your packages delivered? Let's say Amazon packages. So within the Amazon app, there's actually an option to select an Amazon locker, and an Amazon locker essentially is just a little Amazon locker, and they have those all around the U.S. Okay. You can get your package delivered straight to the wherever you are, as long as they have a locker in the area. Mm-hmm. And it basically works just like that. You order your package off of Amazon. You select whichever locker is closest to you. Yeah. They'll send you a code once it's been delivered. You go to the locker, enter the code. Give the code, yeah. And then you get your package. And what about mails and official documents? भाई की फैमिली रहती है इंडियाना में, जो कि एक और स्टेट है अमेरिका में। वहाँ पे हर 2-3-4 महीनों में जाता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, बचपन के दोस्तों से मिलता है। और अब इसके कोई मेल्स वगैरह यानी कि कोई डाक वगैरह चिट्ठी पत्री आई हो तो वो उठा लेता है। अमेज़ोन का भाई ने बताया, अमेज़ोन की जगह जगह स्टोर्स है, उधर से आप पिकअप कर सकते हो किसी भी स्टोर पे सेलेक्ट करके, जिधर ही आसपास उस सिटी के आसपास का कोई स्टोर देता है और उधर से पिकअप कर लेता है। डू यू मिस योर फैमिली? Yeah, I do miss my family, but I talk to them on the phone just about every day. Every day? I try to talk to my mom at least, you know, 5 times a week. Wow. I'm really close to my family, so I do miss them a lot, but I try to make the necessary time to not feel as alone, you know? Yeah, that makes sense. Michael भाई 22 साल का है. Do you wish to have started early, or do you think it's the right time? Or maybe you should have started a bit late or something. Do you have any regrets or anything? So for me, the only regret is not starting sooner. Sooner? Okay. Yeah, I absolutely love traveling, and it's like one of my passions. Yeah. And I was just in a dark place back in Indiana. I had tunnel vision, hometown tunnel vision. And once I traveled, you know, the US, and I finally broke free of that tunnel vision, and I realized all the opportunities that the world has to offer, then it kind of just made me feel better. You know, it was like a sigh of relief. Like, wow, there's so much out here that I haven't experienced yet. And you have friends everywhere now. I have friends everywhere now. Did you go to university? Yeah, I did. Yeah. I actually dropped out to start a t-shirt business. Oh, really? Yeah. It didn't work out yet, but merch coming soon. So maybe that t-shirt business will work out eventually. Yeah. मैं भी ये कहता हूँ कि भी ट्रैवलिंग ना आपको यूनिवर्सिटी ज़्यादा सिखाती है। यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सीखते हो, लोगों से मिलते हो, वो चीज़ भी बहुत आपको सिखाती है। तो जितना ट्रैवलिंग सिखाती है ना, वैसा मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको सिखा सकती है। और अपने इंडिया में ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। अपने ट्रैवलिंग करना मतलब धक्का खा रहा है, यूँ मानते हैं। मैं अब आपको यूँ नहीं कह रहा, जो लोग वीडियो देख रहे हो कि भी आप भी घर वालों से दूर भाग जाओ, गाड़ी लेके निकल जाओ, उसमें रहने लग जाओ, पर मैं बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा ट्रैवल ज़रूर किया करो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। सब लोगों के लिए ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Just get out there and, you know, with whatever you have, you can do something, you know. Even if you just go down the street and you travel for 2 days, that's still traveling, you know. Start small, build your way up. Obviously, I'm still in a small space, so nothing other than that. And the main message I like to preach is just follow God, follow God's will, and try to be the best person you can be. Yeah. And happy travels. And what advices would you give to someone who wants to have a life like yours, maybe live in a car like yours? How to start? The best way to start is to start small, plan a small trip, go on like a 2-3 day trip. You know, that park you wanted to visit, that forest you wanted to visit, that desert you wanted to visit, go visit, start small, see if you like it, work your way up. My first trip was a week, my second trip was a month. Yeah. My fourth trip is now 45 days and counting. That's a really good advice, I must say, because some people, they are like, I want to do something, but when they actually get into that thing, they're like, no, I made the wrong choice, and they've invested so much into that already that they cannot go back. Exactly. So they would like maybe sell their house, sell all their belongings, and then get a nice RV or something, move into that, start traveling, and then realize, no, I'm homesick, I can't do that. Yeah. So that's a really nice advice. आप हमेशा छोटे ट्रिप करो, आप खुद देखो कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। ये नहीं कि सब कुछ बेच बाच के सीधा गाड़ी लेके निकल गई और मैं तो इसी में रहूँगा। क्या पता आप थोड़े दिन का शौक आपको उतर जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ जिसमें आपका लॉन्ग टाइम पैशन नहीं है, आप लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, तो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करने का, एफर्ट इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे आप बेनिफिट नहीं कर पाओगे। एंड में जाके डिप्रेस्ड होगे, दुखी होगे, ना उस चीज़ से आप पैसे बना पाओगे। जैसा आप देख रहे हो भाई, सनसेट होने लग रहा है और थोड़ी देर में भाई
का सोने का टाइम भी हो जाएगा। सुबह उठ जाते हैं भाई 6-7 बजे और रात को टाइम से सो जाते हैं, गाड़ी के शीशे वगैरह ढक के। अभी मेरे ख्याल खाना वगैरह बनाएगा, लेकिन अभी शीशे ऑलरेडी ढकने स्टार्ट कर दिए इसने। तो ये बेसिकली विंडोज़ को कवर करने लग रहा है प्राइवेसी के लिए। ओह ये देखो भाई, अच्छा तो ये शीशा लगा के ये लगा दिए इधर विंडो का कवर, और ये एक और, दिस इज फॉर द बैक वन और समथिंग। ओह side window. They're magnetic. Is it magnetic? So it just pops in like that. Wow. I just let go. This is really nice. The reflective part actually insulates your heat. So my body heat reflects off of this, and this is how I stay a little bit warmer in the colder nights. That makes sense. Like last night, it was about 30 degrees, and it was getting kind of chilly. तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है रात को यहाँ पे, और ये जो है ना, ये रिफ्लेक्टर है बेसिकली, हीट अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी एक मेरे ख्याल 100 वॉट के बल्ब जितनी हीट प्रोड्यूस करती है, और वो ये हीट गाड़ी के अंदर ही रहती है ताकि गाड़ी गर्म भी रहे। वन मोर थिंग, हाउ डू यू मैनेज द weather extremes if it's like too cold, and what if it's like too hot? So if it's too hot, I actually have I have a fan. You have a fan as a well? rechargeable fan that blows directly on my face, and I'll have my windows cracked so I have fresh air, and I'll just sleep in my boxers, and I'll use a sheet as a blanket. Now when it's super cold, I'll have this sleeping bag, and I have a heated sleeping bag that's actually powered. Yeah, we saw it. Powered by a battery bank. Oh. Battery bank. And it stays up to like 90 degrees all night. It's super hot. Like it's too hot almost. Like I can't handle it sometimes. Wow. I've slept in like 20 degree weather, which is below 0 in Wow, Celsius, wow. multiple times. And if it's like super warm in the summers in the day, do you like often go to cafes and just sit there in the air conditioner, or go to a mall? Yeah, or go to the beach and swim. Amazing. So this is your setup before you go to bed, right? Yep. So these reflectors, the sleeping bag, because it's not too cold, this bag would be more than enough, a pillow. Hello. That is it, right? Yeah, that's it. And then I'll just, well, for entertainment, I like to watch YouTube right before I go to sleep, so I'll just watch some YouTube. Yeah. And you know, it's like a flat screen TV if it's right here. Man, you're living a luxury life in your car without paying anything. सही है यार, ये गाड़ी का जुगाड़ इस भाई ने तो एक नंबर का रखा है। मतलब मेरे को तो सही लगा यार, मजेदार चीज है। मतलब कितनी ठंडो गर्म स्लीपिंग बैग है, हीटेड। कितनी गर्मी हो, गाड़ी में पंखा रखे इसने, पंखा लगा के पंखा चला लिया और अपना फैन से ठंडक ले ली। ज्यादा गर्मी है तो बीच पे चला गया, गाड़ी बीच पे लगा के नहाने चला गया, समुद्र में, मॉल में चला गया, स्टारबक्स पे चला गया, वहां पे काम कर लिया। मतलब हर चीज का सोल्यूशन है। जितने मेरे मन में सवाल थे ना भाई ये कैसे होता होगा, अपने सबके मन में जो सवाल आते हैं कि कोई आदमी गाड़ी में रहता है, तो जितने भी सवाल है सबके जवाब तो भाई ने दे दिए और दिखा दिए कि कैसे करता है। तो मेरे को काफ़ी लॉजिकल लगी सारी चीज़ें कि भी नहाना धोना सारा उधर हो गया, अगना खाना पीना एक्सरसाइज, खाना यहाँ बना लिया, और सोना उठना बैठना सारी चीज़ तो कवर होगी। घूमने का घूमना, जिस टाइम घूमना है सारा टाइम घूमो। सही लगा यार मेरे को, कंसेप्ट सही लगा भाई का, मज़ेदार था। वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आया भाई के साथ। और माइकल को आप लोग सपोर्ट करो भाई। देखो सपोर्ट करो ना करो वो बात अपनी जगह, लेकिन भाई मेरे को पता नहीं था कि ये फ्लोरिडा से आने लग रहा है। मैंने इसके पास मैसेज कराने बोला आई एम ऑन माई वे। मेरे को लगा आसपास होगा, कहीं 1-2 घंटे दूर से आ जाएगा, पर भाई 2 दिन गाड़ी चला के स्पेशली मेरे पास आया मेरे से मिलने और मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए। तो भाई इसको जाके एक बार थैंक यू ज़रूर बोल देना कि इतने एफर्ट्स डाले। इसके चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भाई को जाके एक बार एटलीस्ट एक बार धन्यवाद ज़रूर करना कि भी इतनी दूर आया भाई अपने से मिलने। और अपने इंडियन ऑडियंस को भी काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिलेगी, आप लोगों को इस चीज़ से सीखने को नहीं तो पता चलेगी कि भाई आप में से कोई कभी करना चाहता हो तो आपको पता हो कैसे क्या करना है। और यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि थोड़ा सा यूनिक कंटेंट आपको दिखाऊं जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम है, वो नहीं, थोड़ा सा हटके जो नई नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और उनमें से एक चीज़ ये थी। ओके माइकल, सो it was a great evening with you. I loved recording, and thank you so much for explaining everything in so much detail, and your answers and the way you showed me the things made so much sense, and everything is like super logical. Thank you for driving me around in your car. I had an amazing evening. And do you have a final message for your Indian audience? I've never been to India, but I want to go visit. But other than that, I really appreciate you for having me on your channel. This guy's a huge YouTuber. I'm over here with only 5,000 subscribers, so I feel blessed. And But honored. man, you drove
for like 2 days just to come to meet me for this video. I would never do it, even if it's Mr. Beast. Yeah. I would not do it. This guy is super dedicated. 100%. Get ready for the weekly vlogs, and I Yeah. post every day on Instagram. Other than that, praise YouTube, God. his YouTube, Facebook, Insta, all the links. I've mentioned it before. They're going to be in the description. Go check him out. Thank him for driving this long and coming here. And next time when you come to India, we are going to drive around in my car, and I'm going to rip the seat off for you. I can't wait for that. I can't wait. All right. See you, brother. Thank you so much. See you, man.